Hello everyone. Today's lecture is about UPnP. This is a IoT protocol. So आपको एग्जाम में आ सकता है कि explain the UNP protocol. Okay, you explain the UPnP protocol. Okay. So ये question exam में आ सकता है explain the UNP protocol. So see here now what is the UNP? Okay. UPnP protocol. So ये एक IoT का प्रोटोकॉल है आपको UPnP प्रोटोकॉल. So UPnP is nothing but U for universal, P for plug and play. Okay, इसका full form है universal plug and play. So universal plug and protocol, that is UPnP. So is a set of networking protocol. ये क्या है? ये एक networking protocol का set of networking protocol. Okay, this is a set of networking protocol. आपको याद रखना है कि UNP is nothing but is a set of networking protocol that permits network device. जो क्या करता है? That permits the network device. Okay, that permits network device. मैंने ऐसे लिखा है, but you write all full form. Okay, network, that is network devices. Okay, so UNP ये एक UNP's full form is a universal plug and play protocol. Play, that is a set of networking protocol. So this UNP क्या करता है? Permits, allow करता है network device, जैसे कि such as personal computer. Okay, the device is like such as, just 1 minute, let me correct this. Okay, such as such as personal computer. Okay, personal computers. Okay, personal computer, and then you can say like printers. Okay, then printers, internet gateway. Gateways used to occur the communication between two devices. Okay, the gateway का मतलब. So internet gateway, I can say. Let me correct this first. Okay, computer, printers, internet gateway. Then you can say that Wi-Fi also. Okay, Wi-Fi access point means, you know very well Wi-Fi access point what is, right? Wi-Fi access point. Okay, and mobile device. Sorry. Wi-Fi access point, then mobile device. Okay, so devices to ये अभी इतने सारे example, I think so enough to understand you. That is a UNP is a protocol. Sorry, I said UNP. Nothing. UNP is not UPnP. It is a protocol which is universal plug and play. This is a set of networking protocol. UPnP is nothing but is a set of networking protocol that network device such as personal computer, printers, internet gateway, Wi-Fi access point, and mobile devices. This, okay, like this. So here UPnP is the intermediate family of the UPnP technology was promoted by the UPnP firm, a computer industry in urban age. Okay, sorry, network issue was there. Okay, so here now 1 minute. Okay, now UPnP, here we have seen that the UPnP protocol. The UPnP technology was promoted by the UPnP firm, a computer industry. So here what happened, the firm consists of over 800 vendors involved in everything from consumer electronic to network computing. Since 2016, where it is?
since 2016, all UPnP efforts are now managed by the means जितने भी UPnP के efforts है वो managed by the OCF, managed by OCF. That is what ओपन कनेक्टिविटी फाउंडेशन. मतलब यूपीएनटी में जितने भी एफर्ट्स है वो मैनेज किससे होने लगे? OCF, दैट इज ओपन कनेक्टिविटी foundation. Okay, foundation. So here, okay, so what happened? The form consists of, means UPnP is a, I said what is this UPnP? So here what happened? The form consists of over the 800 vendors. Okay, that is a honor, you can say, involved in everything from consumer electronic to network computing. Then since 2016, by all all UPnP efforts in 2016, since 2016, all UPnP. You have to write in this capital UPnP. Okay, all this effort is handled by the OCF, that is the Open Connectivity Foundation. Okay, so UPnP assume that the network runs internet. UPnP assume the network runs internet protocol, that is the IP. So what happened here? UPnP assume the network runs internet protocol and the HTTP on top of IP in order to provide device service. मतलब UPnP में जो protocols पे जो भी run होते थे in order of device and service. Okay. Then description, action, data transfer means what क्या run होते थे, means protocol में क्या work होता है, that is what device like कुछ data transfer होगा, then some actions will be run, right, means जो भी device search, request and advertisement are supporting by HTTP on the top of UDP using multicast. So respond to search requests are also sent over UDP. You know very well now HTTP. We have already studied about HTTP in my previous lecture, right? What is, so I already explained brief this all, so no need to explain here. Okay, so multicast means what? मतलब one to many, right? Multicasting होना. So here what happened? UDP UNP define an object hierarchy for what UNP complaint device. There is a root device. Each device, every root device publish 0 or more services. Here means what happens here, some root device are there. So this device publishes 0 or more services. And embedded device. Each embedded device can iteratively publish more services. An embedded device by itself. So see here, the UNP architecture follow what? Device to device networking of consumer device, like electronic, mobiles, device, personal computer and network home appliances. It is distributed open architecture protocol based on established standards such as Internet Protocol, TCP/IP, then HTTP, XML, and so simple object, you can say. So SOAP, then UPnP control points are devices which UPnP protocols to control the UPnP control devices. Then UPnP features what included? Media and device independent. Here UPnP features first is the media and device independent. In these, media and device are independent. Media and devices independence. This is the first one. Okay, independence. So what happened here in this? UPnP technology can run on many media that support IP, including Internet. Means here what whatever जो भी UPnP की
यूपीएनपी टेक्नोलॉजी है वो क्या होता है यहाँ पे कैन रन बिकॉज ऑलरेडी आई सेड कि ये मीडिया एंड डिवाइस इंडिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट सो यूपीएनपी ऑल टेक्नोलॉजीज यूपीएनपी okay technologies can run here can run on many media on many media because it's already I said it is in media and devices independent so on many media okay that support we support IP internet protocol include what including ethernet fireware okay home so you can say BT Wi-Fi okay so here what happened UPnP technology is supports run is independent okay so here what happened it can run in any media and device okay device means you know like mobile and all printer you can say this is like a device and in any media like here which like IP protocol ethernet then BT Bluetooth Wi-Fi okay so what happened here is then support is necessary. Common network protocol are used UI user interface control. Then optionally the UPnP architecture able device to present a user interface through a web browser. Then operating system and programming language independence. And second is what here? Second features is what? OS that is operating system and programming language independent and programming language independent. Okay, OS and programming language is independent. OS means operating system. Okay, operating. So first feature is what UPnP. You know now UPnP is nothing but is a set of networking protocol. Network, then this like such as personal computer printers, internet gateway, Wi-Fi access points, all okay. Is 2016 में UPnP is handled since since 2016 all UPnP efforts is handled by OCF like Open Connectivity Foundation, right? Then here future is there like media and device independence. UPnP technology can run on many media and that support IP, Wi-Fi, Bluetooth, okay like this. And OS and programming language also independent here. So any operating system and any programming language can be used to build UPnP product. Means here what happened? Any language, any operating system here, any OS like any operating system and any programming language. You know now programming language means what, right? I don't need to explain what programming language means. Yeah, any programming language. Okay, any operating system and any programming language can be used to build. Can be what? UPnP product. Okay. So then second feature is that operating system and programming language is independent. So here any operating system and any programming language can be used to build UPnP product. UPnP stacks are available from most platform and operating system in both closed and open source form. Then extensibility. Third feature is what? Third one is extensibility. Okay, so what happened here? Let's see. So in extensibility, each UPnP product can have device specific service layer on top of the basic architecture in addition to combining service defined by UPnP from a various way. Vendor can define their own device and service type.
and can extend standard devices and service with vendor defined action state, variable data structure elements, and variable value. So what happened in this extensibility? Each UPnP product can have device. मतलब हर एक UPnP product के पास वो device है specify जो क्या जो specific service ले on top of the basic architecture. मतलब specific service को explain करने के लिए, describe करने के लिए each device having each UPnP products having their own devices. Okay, then this service defined by UPnP form in various way. तो वो services क्या करती है UPnP form various way में show करती है, define करती है. That is जैसे कि vendors can define their own device and service. Here vendor means owner can define their own service and what device and service type. Okay, then it extend standard device and service with vendor defined action state, वेरिएबल डेटा स्ट्रक्चर एलिमेंट्स एंड वेरिएबल वैल्यूज. मतलब इसमें क्या होता है देन डेटा स्ट्रक्चर एलिमेंट्स एंड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस इन दिस futures. Okay, so these are the futures of this UPnP futures. Then protocol UPnP uses common internet technology. It assumes the network must run internet protocol and then language HTTP, SOAP, and XML on top IP address. So addressing what here? The foundation of UPnP networking is the IP addressing. Addressing, see here, it's another part like UPnP में addressing part है. Addressing. Okay, this is a three futures. Okay, this one. This is a three future. Then let me. This is the future of. Okay, this is the future of what UPnP. Now we're going to see the next point of it is in this addressing. The foundation for UPnP networking is IP addressing. Here, each device must implement a DHP client and search for DHP server when the device is first connected to the network. So इसमें क्या होता है? Addressing में the foundation for UPnP network is IP addressing. Okay, each device must implement a DHCP. What? DHCP. Okay. Let me correct this. DHCP. So addressing में क्या है? UPnP networking IP is addressing. Each device must implement DHCP client and search for DHPs. Here, let me write here, then I can explain you better. Each device must implement DHP client. Okay, and search for DHP server and search for DHCP server. Okay, let me explain this. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है एड्रेसिंग में हर एक डिवाइस क्या करती है, डीएचपी क्लाइंट होता है वो क्या करता है, डीएचपी सर्वर. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू पीयर टू पीयर मॉडल एंड क्लाइंट सर्वर मॉडल. सो यहाँ पे क्लाइंट सर्वर मॉडल प्ले करता है रोल. मतलब डीएचपी सर्वर एंड डीएचपी क्लाइंट में क्लाइंट कैनॉट एक्ट एज अ सर्वर एंड सर्वर कैनॉट एक्ट एज अ क्लाइंट. तो यहाँ पे क्या होता है, अगर नेटवर्क में कोई न्यू क्लाइंट आता है, ओके, सो अभी न्यू क्लाइंट सपोज ऑलरेडी एबीसीडी ये मशीन या डिवाइस है, ओके, दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. So with the help of this DHP server, A can communicate with B. Okay, एक suppose switch है. Let me draw the summing diagram. जैसे कि आपको perfectly समझे. Okay, suppose एक switch है, ठीक है. Then okay, suppose यहाँ एक switch है. Then
ये okay, see, okay, suppose ये switch है, okay, switch, okay, suppose ये A device, ये B, okay, and suppose ये C, ऐसे many device है, okay, suppose C, तो क्या होगा यहाँ पे A can and this all are devices connected to, suppose these all are devices connected to this server, suppose, okay. ओके, और सपोज यहाँ पे एक कंसीडर दैट यहाँ पे आपका DHCP सर्वर है, ओके, DHCP सर्वर। तो यहाँ पे क्या हुआ, DHCP सर्वर ने हर एक क्लाइंट को ऑलरेडी आईपी असाइन की है, ठीक है। अब ऑलरेडी हर एक क्लाइंट के पास आईपी है, सो दे कैन कम्युनिकेट विच ईच अदर, बिकॉज इस स्विच को पता है कि इसका आईपी क्या है, इसका आईपी क्या है, इसका आईपी क्या है। अगर कोई मैसेज सी के लिए होगा देन स्विच कैन इजीली कन्वर्ट दिस मैसेज टू हियर, एंड कोई मैसेज लाइक दिस, मतलब ओके, सो देन मतलब इस चीज के बाद इन सबके आईपी एड्रेस, देन दिस थ्री कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर, ओके। बट व्हाट हैपन, सपोज एक न्यू बंदा है, ओके, एक न्यू क्लाइंट आया, जैसे सो यू कैन से एक्स, ओके, देन एक्स के पास कोई आईपी एड्रेस नहीं, दिस थ्री हैविंग ऑलरेडी आईपी एड्रेस, सो दे कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर, राइट। लेकिन यहाँ पे जो न्यू बंदा आया तो उसको तो आईपी एड्रेस नहीं पता, और ना ही इसको ये पता कि डीएचपी से कैसे हम मुझे आईपी एड्रेस लेना है, राइट, बिकॉज डीएचपी को भी नहीं पता कि कोई न्यू बंदा आया। और देन दिस क्लाइंट आल्सो नो वेयर इज द डीएचपी सर्वर, बिकॉज डीएचपी सर्वर से हम लोग क्या लेते हैं, क्लाइंट क्या करता है, आईपी एड्रेस लेता है। सो व्हाट हैपन हियर, दिस क्लाइंट व्हाट विल डू, ही विल डू ब्रॉडकास्टिंग, मतलब वो नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट मीन्स व्हाट, लिसन फर्स्ट, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मतलब कि एक पर्टिकुलर मैसेज हर एक नेटवर्क में पहुंचना, यू नो, यूनिकास्ट वन वे कम्युनिकेशन, bi-directional communication you can say, या one to one communication। multicast means you know one to many। अब हम लोग व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, राइट, मतलब हम पर्टिकुलर ग्रुप बनाते हैं, दैट इज मल्टीकास्ट। लेकिन हम एक से ही अपना मैसेज ब्रॉडकास्ट में हर एक बंदे को ग्रुप में ऐड करते हैं, राइट। लेकिन जब हम लोग वो मैसेज सेंड करें पर्टिकुलर इंडिविजुअल बंदे को मैसेज जाता है, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग। सो यहाँ पे क्लाइंट क्या करेगा, ये एक्स नेटवर्क पर ब्रॉडकास्टिंग मैसेज सेंड करेगा, मतलब वो हर एक बंदे को मैसेज सेंड करेगा अपना कुछ पोर्ट नंबर से, 67 पोर्ट नंबर से, और उसको सेंडिंग करेगा, और कुछ आईडी सेंड करेगा FSF 2.5 पर, मतलब अपनी आईडी को सेंड करेगा, ओके, टू ऑल सर्वर, टू नेटवर्क सर्वर। सो वहाँ पे राउटर, जितने भी प्रोटोकॉल्स हो गए, जितने भी सर्वर्स हो गए, उन सब तक वो ब्रॉडकास्टिंग होगा वो मैसेज कि आई नीड द आईपी बिकॉज आई वांट टू कम्युनिकेट विद हियर, ओके, सो आई वांट आईपी एड्रेस। सो वो ऐसे ब्रॉडकास्टिंग होते होते सबके पास जाएगा वो मैसेज। तो वहाँ पे क्या होगा, राउटर जितने भी सर्वर रहेगा जिसको ये यूजफुल नहीं है, मतलब इनको समझ जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्ट नंबर की ये डीएचपी सर्वर को सर्च कर रहा है नेटवर्क पर, क्योंकि नेटवर्क पर मिनिमम वन और मैक्सिमम अबाउ वन, मतलब 10 अबाउ, बहुत सारे डीएचपी सर्वर होते हैं नेटवर्क पर। क्यों, बिकॉज अगर एक डीएचपी सर्वर किसी कंडीशन से डाउन हो जाता है या प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, तो दूसरा डीएचपी सर्वर उसकी जगह वर्क कर सके। सो इसलिए नेटवर्क पर, एक बिग नेटवर्क पर वन, मिनिमम वन एंड मैक्सिमम कांट से कितने भी हो सकते हैं, ओके। सो डीएचपी सर्वर को सर्च करेगा, तो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू क्लाइंट आईपी एड्रेस
मांगेगा DHP सर्वर से। तो ऐसे करते करते DHP पर्टिकुलर DHP सर्वर को पहुंच जाएगा वो मैसेज कि सम क्लाइंट नीड IP एड्रेस, देन DHP सर्वर विल ऑफर IP एड्रेस टू दिस क्लाइंट। तो क्लाइंट क्या करेगा जब वो जो भी ऑफर करेंगे, आई हैविंग लाइक दिस IP एड्रेस, इफ यू वांट देन ओके आई कैन प्रोवाइड यू। सो DHP क्लाइंट क्या करेगा, अगेन ब्रॉडकास्टिंग करेगा रिप्लाई में भी, ओके थैंक यू फॉर योर, मतलब मुझे आपका मतलब मैं ठीक है, मुझे आपका जो भी IP एड्रेस है वो एक्सेप्ट है। वो फिर से ब्रॉडकास्टिंग क्यों करेगा, बिकॉज इस नेटवर्क पर आई ऑलरेडी सेट कि एक से ज्यादा DHP सर्वर होते हैं, और तो बाकियों को भी समझ जाए कि इस बंदे को पर्टिकुलर DHP सर्वर से IP एड्रेस मिल चुका है, सो हमें नीड नहीं इसको प्रोवाइड करने की, इसलिए दोनों टाइम ब्रॉडकास्टिंग करेगा। इस तरीके से इसको IP एड्रेस मिलता है। ओके, सो हियर मैंने क्या कहा, द फाउंडेशन ऑफ UPnP network is the IP addressing. Each device must implement a DHP client and search for DHP server when the device is first connected to the network. If no DHP server is available, the device must assign itself an address here. The process by which UPnP device assign itself an address is known as a within UPnP device architecture as auto IP. So here I hope कि आपको DHP का ये client and server का point समझा होगा. Okay, then UPnP AV standard. So UPnP architecture is a audio like UPnP architecture is UPnP architecture is an audio video extension of a UPnP. मतलब UPnP architecture is an like audio video extension of the UPnP, supporting a variety of devices. UPnP architecture supporting a variety of devices such as TV, VCRS, CD, DVD. Okay, CD, DVD players. Then you can have set-top boxes. Okay. MP3 players still means what here UPnP architecture is audio and video extension of UPnP supporting a variety of devices such as TV, VCR, CD, DVD players, then set-top boxes, then MP3 players, still image camera, like this electronic picture, okay, and personal computers. AV architecture allow devices to support different type of format for okay, including the MPEG2, JPEG, MP3 Windows, media audio, okay, bitmap, and so on. So on 12 July 2006, the UPnP forum announced a release of version 2 of the UPnP audio and video specification with new media server version 2.0 and media render version 2.0 classes. So 2006 में on 12 July में on 12 July 2006 में UPnP के version 2 that is a media server and media renderer version 2.0 ये classes announce की गई. Okay, so this is about UPnP. So UPnP media render which is a slave's device that can render play content. UPnP rendering control DCP control media render setting volume, brightness, RGB sharpness and more. मतलब जो रेंडरिंग है वो क्या करती थी, RGB sharpness for brightness के लिए और setting the value, वॉल्यूम सेट करने के लिए, ब्राइटनेस एंड शार्पनेस के लिए वी आर यूजिंग दिस पॉइंट, दिस कांसेप्ट विल इंट्रोड्यूस. ओके, so okay, अभी UPnP stop here now. This is the protocol. So here I already said this is a providing the service architecture, like define the UPnP complement device. There is a root device, okay, then documenting device and service capability, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. Okay, so today's session is over here. Thank you, UPnP protocol.